It's an attempt to declassify what's been a highly classified mission undertaken by India during the 1971 Indo-Pak War. A secret which has been well kept perhaps for 5 decades. The film is called IB71 and features Anupam Kher and Vidyut Jammal. The two are here in the studio with me. Thank you and so much. You have been kind enough to travel all the way to my studio. Anupam sir and Vidyut, thank you. Thank you, thank you. Anything to do for you. I love you as an anchor. You do such amazing job, and it's a mutual respect for each other. Thank you so much, sir. You have been very kind. Whenever there is a cinema which is supposed to be based on real life events, it becomes very controversial. Tell me, why should I watch IB71? Well, I think if you enjoy the independence and the freedom of the country, and if you feel that completely you have the freedom of expression, you need to thank those unsung heroes who fought for us, whose intelligence inputs made us win the war in 13 days. I think sometimes it's also important. Why do you watch old American movies? Why do you watch war films on war? Or why do you watch fictional Mission Impossible? This is real Mission Impossible. So this is India's Mission Impossible. And a real one, not fictitious one. Okay. It was impossible to carry forward this mission within few days, 10 days. 13 days. No, I'm talking about our film. And 30 undercover agents. Nobody knows about Intelligence Bureau officers. Nobody applauds them. Nobody knows who they are. They are never awarded. They are never given any medals. They are never so. And yet we are. We should be thankful to them. And also, it's a very thrilling film. Our director Sankalp Reddy made a film called Ghazi Attack, which was a very, very thrilling film. And all the details. It respects the audience. It respects the sensibility of the audience. So intelligence of the audience. Yes, exactly. Okay. Vidyut, whenever you claim that a cinema is based on real life events, there's a lot of pressure on getting it right. What was the research like? Because you are also the producer of this film. More than the pressure, I think there was a curiosity and an intrigue in us. The moment the story came to me, we needed to work on it. The director and I and the executive producer, we started looking for all the truths. And the most important part was to know the other side's opinion. That is the Pakistan's opinion too, because if you need to go to the truth, you need to know all the aspects of it. We went through all the notes, all the books, all the articles that have been published on the other side. We spent about 7 months researching. We started meeting a lot of officers. We started understanding how the Intelligence Bureau works. We got into everything. We tried to figure out all the things, all the truths, and here we are. No, but there is very little known about this incident. Yeah, even I did not know much about it. Ganga Mission? People know about the hijack. The more important thing. But लेकिन पूरा जो picture है वो कभी clear नहीं हुआ. इसीलिए ये फिल्म बनी है. लोगों को पता ही नहीं है कि there's an Intelligence Bureau of India, which is the #1 secret service in the world. Why we don't know about it? Because we've never had a movie on it. We watch international movies, like Anupam sir said, Mission Impossible, we've watched. We know MI, what it is, FBI, CBI, we don't know what Intelligence Bureau is. Yes, so if we were to talk about Intelligence Bureau or RAW, RAW agents have featured in multiple cinema in recent years. Why pick up 1971? What was the significance of Indo-Pak War then? It's the biggest mission any secret service has ever done. Imagine going into the enemy territory with just 30 people, without guns, ammunition, just intelligence. Imagine finishing a war in just 13 days. In the current day scenario, we've got Russia fighting Ukraine, like a massive country with a smaller country. It's been 1 year, the war's still going on, 65,000 deaths or more. But this mission was completed in 13 days. It's not the bravery or the bravado, it's the intelligence. And India is known for it. I think there was sorry to interrupt, there was a very, very important incident which happened where Mossad went and rescued their people. So वो उस पे फिल्म बनी है और कितनी कमाल की फिल्म थी वो कमाल का इंसिडेंट था कि वो they flew under the radar जिसमें वो पकड़े जाएं. I think ये important फिल्म है. अनुपम सर, आपने अभी कुछ दिन पहले कश्मीर फाइल्स की, अभी केरला स्टोरी पे बहुत चर्चा हो रहा है और फिर ये IB71 आती है. क्या इसको वो प्रोपेगेंडा कैटेगरी में आएगी या आप बोलिएगा ये फैक्चुअल है, circumstances of an untold story?
देखिए यूजुअल सस्पेक्ट तो जो बोलना है वो पिक्चर देखने से पहले बोलना शुरू कर देते हैं, तो उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो हम ना ही दें तो अच्छा है। वो आपको वही सेम चेहरे नज़र आएंगे जिनको शायद तकलीफ़ है इस तरह की फ़िल्मों से, मगर ये फ़िल्में कामयाब हुई हैं, इसका मतलब ऑडियंस को पसंद आई है। और बदलाव आने में थोड़ा टाइम लगता है, इसी बदलाव की कोई शक्ल नहीं होती है, बदलाव साइलेंट होता है। तो मे बी दिस इज़ द टाइम व्हेन द इंडियन सिनेमा इज़ गोइंग थ्रू अ चेंज which is very important, that you can make a film on, if we are making a film on 1983 World Cup, why can't we make a film about this? वो भी वर्ल्ड कप जीता था, इसमें भी जीती हुई थी, और इसमें तो उसमें एटलीस्ट नज़र आ रहे थे वो 12-13 खिलाड़ी, 14 खिलाड़ी, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। बट वाई कांट वी बी प्राउड ऑफ अनसंग हीरोज़? वाई शुडंट फिल्म मेकर्स, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर बीइंग द फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर एंड चूजिंग ए फिल्म लाइक दिस। तो उसमें जिन्होंने जो कहना है वो तो कह सकते हैं, मगर वो 1% लोग होते हैं, 99.9% लोग जो होते हैं वो देखना चाहते हैं इस तरह का सिनेमा। या यू हैव टू मेक इट हैज़ टू बी अ वेल मेड फिल्म। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म। बाकी यू आर प्रिपेयर्ड फॉर अ पॉसिबल बैकलैश दैट कुड कम ऑन दिस। बैकलैश उसको कहते हैं जिसकी हम इज्जत करते हैं। उन लोगों की मैं इज्जत ही नहीं करता तो वो बैकलैश क्या होगा? And yet there are people who will want to criticize my work. They will be very important. If tomorrow you watch the film, which hopefully you will watch, and you say that मुझे ये picture पसंद नहीं आई, then I'll start worrying and I'll say क्यों नहीं पसंद आई? But I don't think. So I know my people who criticize my work, and I have great respect for them. But every Tom, Dick and Harry sort of gets up and sort of says that ये क्या फिल्म की है, ये क्यों की है, उसके कितने लोगों का ध्यान दे सकते हैं? चलिए लेट्स मूव। आप अच्छी एंकर हैं, मैं मानता हूँ। देखिए दैट्स वेरी काइंड, थैंक यू सो मच। मैं मानता हूँ। नहीं सुनिए आप, मेरा भी आपसे सवाल पूछने का हक है कि आप हर बात की हर एक की सुनते हैं, रास्ते में चलता बोला कि आप मारिया शकील आज आपने अच्छा नहीं बोला, आप उस पर तवज्जो देती हैं अगर आपको लगा कि आपने अच्छा बोला? नहीं। करेक्ट, सिंपल सी बात। मुझे ये बताइए अनुपम सर, बिफोर आई मूव बैक टू दिस, आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन the recent controversy which is around Vipul Shah's movie. I have not seen it, but I think people are loving it. When you say a film like this being loved, I'm not saying loving that way. They want to see reality. How can you take away from the fact that people are going to the theatre hall, spending money, planning to go to a film, and coming out? Shock is also an important reaction to a film. So why not? Why shouldn't we sort of applaud such cinema? What about those who say that 32,000 is an exaggerated number? Because there is a lot of controversy particularly around that number. मैं कहता हूँ एक भी आदमी आपके घर का या मेरे घर का या इनके घर का एक आदमी भी इस तरह से मरता है या इस तरह की सिचुएशन में आता है, क्या डेथ जो है इस तरह की डेथ में सिर्फ स्टैटिस्टिक्स हो गए, नंबर्स? अभी हम वी आर गॉट सो यूज्ड टू नंबर्स कि अरे अच्छा वहाँ पर भूचाल आ गया था, 60 लोग मरे, बस 60 ही, अच्छा अरे बट 60 किसी के माँ बाप बच्चे मरे, उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई। 32,000 या 30,000, वो उस आंकड़े पे जाने में कंट्रोवर्सी क्या है? 5 लोग भी अगर हुए हैं तो मान लेना चाहिए ना, 5 लोगों की ट्रेजेडी क्या कम है? सो आप भी शायद प्रिपेयर्ड होते हैं, जो अपने कश्मीर फाइल्स में आपने खुद एक्ट किया है। I mean, when the filmmakers or actors, when they get into it, are they prepared? कि when it is about untold story or their interpretation of truth, then perhaps this is the response that you'll get. देखिए एक ज़माना था, मतलब आज से कुछ साल पहले की बात थी, कि लोग चाहते थे कि कोई कंट्रोवर्सी हो जाए तो लोगों का फिल्मों पर ध्यान हो जाए। I am from film industry and I'm not sort of taking away, but there were people who used to say कुछ कंट्रोवर्सी करते हैं। PROs used to come कि इसकी कंट्रोवर्सी कर दीजिए सर, पिक्चर की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, पिक्चर गर्म नहीं हो रही है। Now there is a controversy of same people ना, same person you will see, वही लोग सामने आते हैं जो उसकी कंट्रोवर्सी करते हैं, वही लोग हैं। वो आपकी शक्ल इस समय, उनकी शक्ल इस समय आपके जहन में घूम रही होगी और मेरे जहन में तो बहुत ज़्यादा घूम रही होती है। पर पिक्चर बनाने में बहुत वक्त लगता है, बहुत पेशेंस लगती है, बहुत पैसा लगता है, 1 साल लगता है शूटिंग करने में। Nobody is going to make a film just for the propaganda part. Nobody is going to spend that much. एक जगह भाषण जाके देख के खड़े हो जाए ना कहीं पर,
चांदनी चौक में जाके खड़े होकर भाषण दे दें, वो प्रोपेगेंडा हो जाएगा। चलो अगर वैसा, पर क्यों कोई आदमी मेहनत करेगा जिसमें अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं लोग, अच्छा टेक्नीशियंस इस्तेमाल किए हैं, 100-200 लोगों को पैसा मिल रहा है, उनकी रोजी रोटी मिल रही है, वाई विल यू, आप रोज़ हर हेडलाइंस चेंज करती हैं, आप प्रोपेगेंडा के लिए थोड़ा करती हैं, मतलब आप चैनल कोई भी न्यूज़ चैनल। तो ये एक बीमारी है जिससे हमको थोड़ा सा बचना चाहिए। क्योंकि आपने गरम सिनेमा गरम की बात की है, Vidyut, you had put out a tweet in which you said 30 agents, 10 days and one top secret mission that was hidden for 50 years. That perhaps sums up this story. But again, as we say, that this was hidden for 50 years. Why do you think it was hidden for 50 years? नहीं, कई चीज़ों का समय आना ज़रूरी होता है और हिडन नहीं होता है कि there's a lot of things involved in a mission. To start with, this is the biggest mission any secret service has ever done, ever. And I don't think it can be repeated again. Why was it hidden? Because some things should not be told before the right time is. I think it's been enough time, and like Anupam sir said, that there is a time to speak about these great warriors, speak about the intelligence bureau. हमारे खुफिया विभाग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग बात करते हैं। हमेशा रॉ पे फिल्में बनती हैं, हिंदुस्तान की आर्मी या एयरफोर्स पे बनती हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो पे नहीं बनती हैं। When you watch international movies, so many of the movies are being made. Very important. Whenever the time is, it's the right time. I think this is the right time now. This is the story which जैसे has to be told वाटरगेट right now? स्कैंडल है, वाटरगेट स्कैंडल को आप प्रोपेगेंडा फिल्म थोड़ा बोल सकते हैं। That celebrated the triumph of these two journalists. So how if anybody who will call that film an idiot, we will be an idiot, according to me. So anybody who calls a film like this or film like Kashmir Files, I think is either insensitive or has an agenda to criticize a film like this. Do you think a film becomes propaganda only if it is seen from the prism of politics? The reason why I'm saying is the kind of opposition that came to Kerala story, for example, has come from a particular political section. That political divide becomes the reason why a cinema is viewed from that prism. Will it be fair to say that? नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि हम इस फिल्म की तारीफ़ करने आए हैं, हम उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते कि कोई फिल्म। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु हैव मेड केरला स्टोरी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। विपुल शाह इज़ अ फ्रेंड ऑफ मैन। यू नीड guts to sort of make a film like this. Nobody, as I said to you, wants to make a film because आपके बायोडेटा में आता है फ्लॉप या हिट। फिर आप देखते हैं कि इस बंदे ने कितनी फ्लॉप दी है, कितनी हिट दी है। तो इस तरह के आज से कुछ साल पहले अगर जब इस तरह की फिल्म चलती थी तो हम सेलिब्रेट करते थे। श्याम बेनेगल की कोई फिल्में चलती थी तो हम सेलिब्रेट करते थे। मनी कौल साहब की फिल्म करते तो हम छोटी फिल्में होती थी, वो भी केतन मेहता की फिल्म छोटी फिल्म होती थी, मगर अब सेलिब्रेट करते थे। अब सेलिब्रेशन बंद हो गई है, अब क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है। आई थिंक व्हाई नॉट सेलिब्रेट सिनेमा ऑफ ट्रूथ? So this is cinema of truth. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब आप हमारी फिल्म को ले जाइए तो रिकॉर्डेड है ना, इसको 50 साल बाद बोलें या 100 साल बाद बताएं। आज हम पुरानी बातों को याद करते हैं तो हमको तो फिर भगत सिंह पर कोई फिल्म बनानी नहीं चाहिए, हमको गांधी जी पर कोई एटनबरा को फिल्म बनानी नहीं चाहिए। उसको तो नहीं किसी ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, अरे अहिंसा क्या होती है, ये एक आदमी के पर फिल्म क्या हो रहे हैं, या भगत सिंह के बारे में भगत सिंह ने तो ऐसा लिखा था। नहीं बोलते हम, बिकॉज वी लव एंड रिस्पेक्ट दोज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फ्रीडम। सिमिलरली वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट दीज 30 एजेंट्स who put their life. We don't even know their names. Yes, we don't. हमें ये भी नहीं पता है कि ये चेन्नई से थे, हैदराबाद से। इंटेलिजेंस ब्यूरो hires people, or the people who are serving over here are from different places. Yes, and they are the most faceless people. Yes, and like you cannot be pushing anything without. जैसे प्रोपेगेंडा की बात हो रही है, फौजियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। My father was serving in Jammu and Kashmir and we had the Chennai regiment serving there. हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ पे प्रोपेगेंडा नहीं है, वहाँ पे हकीकत बताने की सिर्फ जिम्मेदारी है। As a producer also, for me it was imperative to speak about the intelligence bureau. Simple, the biggest mission that has ever happened. Simple, everybody needs to know. And you are making a debut. Yes. Sorry, my personal experience. मेरे फादर के सबसे छोटे भाई, मेरे चाचा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। मुझे उनमें कोई खुफिया चीज़ नज़र ही नहीं आती थी। मैं उनके ऑफिस जाता था, शिमला में डॉर्मर्स में उनका ऑफिस था, डॉर्मर्स बिल्डिंग का नाम था,
वो लगता था कि किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं या अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहाँ काम कर रहे हैं। वो घर पे आते, मैं उनसे 1000 बार पूछता था क्या होता है, आप बताइए ना। मजाल है उन्होंने आज तक मुझे कुछ बताया। तो आई थिंक इट्स फिनोमिनल, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। हमारी सेनाओं का तो हाथ होता ही है हमारे को सुरक्षित रखने में, मगर एक इंटेलिजेंस ब्यूरो किस तरह से काम करता है, किस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट देता है, आई थिंक इट्स रिमार्केबल। अब ये सोचिए ना, देयर वर 30 पीपल हु ऑर्केस्ट्रेटेड द हाईजैक। इन्होंने तो कभी बात नहीं की, मैं मान सकता हूँ, ठीक है नहीं की, दे आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। व्हाट अबाउट द किड्स? दे मस्ट हैव स्पोकन टू द किड्स, दे हैव बीन in an hijack, they must have spoken to somebody, but nobody ever spoke. Imagine the brilliance of the Secret Service. घर वालों को भी नहीं मतलब बताते, बात ही नहीं की है। You've never had anybody. आज हमारे साथ कुछ हो जाए, हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे बात करें, nobody है. It's our responsibility. Okay, tell me, since you are making a debut with this as a producer with this film, and they are larger than life stunts, as we saw that in the trailer. Is this the new beginning of those kind of stunts in Indian cinema, where there's a lot of effects that we have seen in recent times? Because you are competing with a particular genre of cinema which has perhaps begun from southern India. नहीं, मुझे इस बात से भी दिक्कत है, जैसे हम लोग बात करते हैं ना पैन इंडिया, ये साउथ ईस्ट वेस्ट, वेयर वी कम फ्रॉम, हम लोग ऐसा देखते ही नहीं। आई वर्कड इन द साउथ बिफोर एंड आई हैव स्टार्टेड माय करियर ओवर देयर। सो व्हेन पीपल आस्क मी अबाउट द पैन इंडिया conversation, I really mean it. I don't see south, east, west. I see only good cinema. Coming to Stunts. there aren't so many stunts in the movie. It's a true story. Yes, we've taken cinematic liberty, about 5% of it. But there aren't stunts what I'm used to doing in my movies. सच्चाई के बहुत पास हैं हम लोग, काफ़ी हकीकत के पास हैं। हकीकत बयान कर रहे हैं हम। हकीकत बयान कर रहे हैं। हकीकत फिल्म आई थी एक 1962 की वॉर की जी। उसको तो किसी ने नहीं कहा ये वो वॉर ट्रेजिक था, बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। उससे पहले हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे और सडनली माओ से तुंग ने बोला कि अटैक करो, तो उसको नहीं बोला। ये नई नई बीमारी है, शुरू हुई है। तो जो ठीक है, आई थिंक आई एम वेरी, एज आई सेड टू यू, कि इसमें जो स्टंट्स जो भी आपको नज़र आ रहे हैं वो रियल है। वो प्लेन हाईजैक करके गए थे, दे डिड नॉट वांट, वो 30 लोग रियल थे, वो किसी के भाई थे, किसी के फादर थे, किसी की बहन थी, और वो गए वहाँ पर, और वो मारे जाते नहीं मारे जाते, वी वुड हैव नॉट बीन एबल टू टॉक अबाउट देम टुडे। हमें नहीं पता लगता ना कि क्या हुआ उनके साथ। तो दे वेंट विद द knowing the truth and the fact that they may not come back to the country, but yet to sort of go, और खटारा था वो जहाज, decommissioned था। हाँ, decommissioned था, वो उसको लेके जाते हैं। Anupam sir, you know, working with a first-time producer to your own journey. He did not give me an impression that he was first-time producer. Okay. He provided me great comfort. He gave me fairly good money also, and he was wonderful producer. But yes, sorry, finish your question. Yes. So, working with a first-time producer to working in Hollywood to the kind of movie that is going to come. Another one about which you tweeted only recently. It's like a cartoonish. Vijay69. Vijay69. It's been quite a journey. And would you say that you're fortunate that work keeps coming and you will be only experimenting? I'm God's favorite actor. Wow. He has really, really provided me with so much of joy. I'm a forest department clerk's son. I came to the city of Mumbai with 37 rupees. Today I'm talking about my 537th film. First film produced by Action Hero Films. Talking about this, it's so been, God has been so kind. मतलब मैं अपने आप को बड़ा दुखी कर सकता हूँ, why am I not Brad Pitt? But I am very thrilled to be able to do in a span of 38 years, and still, I'm still reinventing myself. I did a film, जिसकी आप बात कर रहे हैं, Vijay69. It's a film on triathlon, a man who starts running at the age of, participates in the triathlon at the age of 69. And to be able to do that film, मतलब मेरी आज ये टांग में बैंडेज लगा हुआ है, पीठ पे भी बैंडेज लगा हुआ है, because I actually learned swimming for that. कितने actors को, कितने लोगों को ये मौका मिलता है? Because my competition is with my own self. I don't take the burden of Anupam Kher very seriously. That's why I'm so light that I can fly high. And it's so beautiful to be able to do that. Are there some regrets? You know, the reason why I'm asking is that only recently I saw a very moving video
of you being there at the prayer meeting of Satish Kaushik. Don't start me on that, I'll start crying. I But anyway. realized that there are several moments you have shared with him, and we have been as viewers perhaps witness to those moments because that happened on cinema. But there are several aspects that you have stood for what you are, in the sense that you did not try to follow someone. And who are these people who were such strong bonds for you that made you Anupam Kher the way he is? He's experimenting, he's doing his things without following someone. I think we should celebrate life. We don't celebrate life. We either criticize life or we criticize living. We are always unhappy. My grandfather used to say the easiest thing in the world is to make somebody happy. I just try to follow that. My friend passed away. I just had regret that I did not know that it will happen so suddenly. I wish I had had a longer conversations with him, but he was like a habit. Means when I know that anybody who is born has to go one day, but and people go. My father passed away. I celebrated his life rather than mourn his death. But Satish was my habit. In सुबह उठना, फ़ोन करना. अभी भी मैं कभी उसके ऑफिस के आगे से जाता हूँ तो I tell my driver सतीश के ऑफिस ले ले. So habit का जाना जो है, it gets withdrawal symptoms. I spoke to him 4 hours before his death, and I told him, I said तू sound नहीं कर रहा अच्छा. सतीश तू एक काम कर, किसी हॉस्पिटल में check in कर. I use the word check in because I thought if I tell him admit हो जा तो he will get worried. He said नहीं मैं तो कल आ रहा हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है. तो I wish I had called somebody and told him इसको forcefully ले जाओ वहाँ पर. तो वो regrets हैं. Otherwise I don't think of life as regrets. I think life is a triumph. To be able to get up in the morning and sort of see sun and go for work is beautiful. Sir, एक बात बताइएगा, just like, sorry, I have to ask him Yes, this question. Like, yes. it's easy to say that life is a triumph and you should celebrate it. But जिसको नहीं आता है celebrate करना, वो कैसे उसको सीखे? सीखना चाहिए मुझसे. नहीं, कैसे सीखे? Because आप एक और भी बात मेरे ग्रैंडफादर कहते थे, आज आपको सारी ग्रैंडफादर की बातें सुना रहा हूँ कि happiness and sadness is in your hands. You can feel very sad by thinking how many people are better than you, but you can feel very happy thinking how many people are worse than you. And even if you are the worst, smallest person, there will be still so many people worse than you. जब आप अपनी खुशी, अपनी तकलीफ दूसरे से डिसाइड करते हो या दूसरे को नापते हो, तो आपको लगता है कि आप तो बहुत डिफरेंट हो. मैं आपके स्टूडियो, एयर कंडीशन स्टूडियो में पीछे मेरी फ़ोटो चल रही है, आधे सामने टीवी पे मेरे फ़ोटो चल रही है, 15 लोग मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं, और मैं कहूँ अरे यार मैंने खाना नहीं खाया अभी तक, यार मैं कुछ नहीं, मैं ज़िंदगी में पिछले 32 साल से 2 शब्दों का इस्तेमाल कॉन्शियसली नहीं किया. बोर्ड एंड मूड नहीं है. We unfortunately give this false impression of importance to ourselves. ये false impression है कि मैं वही आदमी बोलता है मेरा मूड ठीक नहीं जो अपने आप को बड़ा सीरियसली लेता है. जो आप यहाँ पर अपने लाइटमैन से पूछ लीजिए, वो कभी कहता है कि मेरा मूड नहीं है आज. ये लग्जरी ऑफ सर्टन क्लास है. यार I'm bored of this. So anyway, we are going into both ways, sir. He's a little different. As a producer, I can tell you, he's done more than 530 movies. It's not easy to sign him. If people think you can just go with the story, give him a lot of money, impossible. He will ask you so many questions. He's very curious. So that's the producer speaking, and I've been told by your team to wrap up this conversation. So let me come to the final question. As the producer, why should I watch this film? What will you be telling people who are watching this interview? There are a lot of reasons. उनमें से 1-2 तो बयां करी हैं मैंने. इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में कोई नहीं जानता है. दुनिया का सबसे बड़ा मिशन हम लोगों ने किया, कोई नहीं जानता है. To just know about the brilliance of our forefathers, of somebody who's been there, it's important. Apart from that, it was my responsibility to be a producer and do whatever I thought was required. We cast 30 agents from the National School of Drama who've never been auditioned, who've been ignored. I've been in that journey before. So as a producer, I thought, why not cast people who have the brilliance but have been ignored? There are people, their faces I had watched on TV but never seen them again. We cast them all. So things like this, it has to be watched. So, okay. So also, if you like thriller, there can't be a better thriller than this. It could be one of the best that I've witnessed. Yeah, and the thriller and which the has best actually that you have happened. worked for so far in 537 films. Absolutely. You see, I have done all kinds of work, and I own all that work that I have done. Some of them has been, most of them, in under 530 has not been great, but I've loved it. That's part of my journey.
बट अब मैं जो पिछले 10 साल से 8 साल से काम कर रहा हूँ, आई एम जस्ट चैलेंजिंग माई सेल्फ एज एन एक्टर एंड आई एम अ लिटिल चूजी विद वॉट आई एम वर्किंग, हाउ आई एम वर्किंग, हाउ कैन आई इम्प्रूव। एक्टिंग मुझे लगता है अब आनी शुरू हुई है मुझे, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, आई एम नॉट बीइंग मॉडेस्ट। अब मुझे मज़ा आता है। पहले मैं करता था टेंशन में कि कर लेता हूँ, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ मैं अच्छा एक्टर हूँ। अब मैं करता हूँ कि मुझे अपने आप को बताना कि मैं अच्छा एक्टर हूँ। दे शुड वॉच इट बिकॉज इट्स अ ग्रेट थ्रिलर। Always a pleasure to speak to you, sir. So much to learn. Thank you so much. And thank you, Vidyut, for your time. Next week is when this untold story releases. Go catch it in the cinemas near you. Thanks so much for watching.